What slide were we on? Slide 11. So, gentlemen, last Monday we started trade remedy laws, and just to recap that, trade remedy laws are basically invoked to protect your domestic industry, and that protection is on two accounts. Number one, I explained it on the board, if you kindly remember, that the prices are not normal. Either the price is subsidized or the price is dumped. And the other case was where the prices were not taken into account, and just the concept of increased imports, or the surge of imports, or the thrust of imports, in case a country has earned an obligation under the GATT. As a result of that, if some surge is taking place or increased imports are taking place, to counter that, you could apply the safeguard measures under Article 19 and agreement on safeguards. And the third one was where, in case the industry was infant industry, or the government wanted to protect a certain industrial sector, like it has done in the case of cement and electric cables, because both the things were inputs to the housing and construction sector, and keeping that in mind, the government protected these two industrial sectors. Now, these were the three basic trade remedy laws available under the WTO to protect its domestic industry. Now, if you remember the title of your course which you are undergoing, the course is the impact of WTO on Pakistani industry or Pakistan. Now, when we talk of impact, there should be some tools or some measures by which you can help your industry, you can assist your industry, you can protect your industry to enable it to withstand the pressures, to withstand the unfair trade, which is on two accounts, I would repeat, on subsidy, and number two on dumping. So under that, we first took up the concept of anti-dumping. And we had covered this till the definition, and I may repeat the formal definition. The informal definition or the broad definition or a layman's definition says when the home price is greater and the export price is lesser, the product is said to be dumped. But the formal definition, which is not only the definition, which contains a number of concepts which need to be clarified, which need to be understood, are number one, that when a product is introduced into the commerce means trade of another country at a price which is the export price, which is less than the comparable price. Now, this comparable price is the normal price in the ordinary course of trade of a like product destined for consumption in the exporting country, or dumping is the normal value is equal to normal value when normal value is greater than export price. Now, the concepts used here are the export price, the comparable price, that is the normal value, or the home price in the ordinary course of trade. Now, what is ordinary course of trade? आम हालात तिजारत के जो हों. अब this concept has not been as such defined, that what is ordinary course of trade in law. But we have to see it by citing examples that when a situation is not an ordinary course of trade. There are two ways to understand a thing. One, that you get a definition for what is ordinary course of trade. If that definition is not given, maybe you would try to infer that by referring or citing instances which can prove when a situation is not ordinary. So we'll try to see this ordinary course by citing negative examples. Then course of trade of a like product. Now, what is a like product? We'll try to see that what it means. So essentially, dumping is a discrimination between national markets and the markets abroad. Next. Now, a very basic question, that why a country dumps, or why dumping, or why should a country dump? Now, there are a number of reasons that
Number one, to explore new markets. That is normal market expansion. Now you have got an installed capacity in your own country, say about 100,000 pieces a year, all told capacity. When we say all told capacity, this means being produced by all the industrial units in your country. And then the national demand is, say, about 70,000. So you are left with 30,000 additional installed capacity, which you can, or maybe you can double the shift and increase the installed capacity. So how can you sell it, and where can you sell it, and at what price should you sell it, and how should you go about it? So we'll try to see all those points. So number one is that you try to explore new markets, or that is your normal market expansion. Then capture markets abroad. Now you have the installed capacity. First motive was normal, that you want to expand. Number two, the motive is that you want to capture some market. Now who can capture the market? Obviously the firm or the company which can produce or which can sell at a lower price. Number three, cyclical products. Now domestic market is in downward phase. Now there's so many products in a country which move with phases. There is a boom phase, there is a decline phase. So if there is say a decline phase in your own country, what would you do? You would try to sell it abroad. And then saturation of domestic market. Now if you can't sell anymore in the domestic market, for instance, in our country, I can quote you an example of say those polypropylene bags. Have you seen them? Polypropylene bags, जिसमें वो चीनी पैक होके आती है, वो पतले पतले टेप, इसको you pack sugar in it. अब उसकी कैपेसिटी पाकिस्तान में इस वक्त ओवर कैपेसिटी है. अगर 50 बैग्स की थी requirement, तो probably there are 200 production capacity to produce 200 bags. So the domestic market has saturated. What can you do? You have put up the plant, you have fixed everything, you have employed people, you have imported raw materials. So then you try to export them elsewhere. Then price resistance in the domestic market, that is economies of scale, low market. There is a resistance in price that you have to sell it, and that below that you just cannot, and you cannot sell the product, or your products don't find a good market in the domestic market. Then economic downsizing in the domestic market. Then there is a predatory intent. Now predatory intent normally doesn't occur now, but predatory intent means that you dump at a level which cannot be as such proved as dumping, but at the same time that is a slow injury, causing slow injury to the importing country or the domestic industry we are talking about. जी ये predatory dumping is that you try to sell at such a level that it is dumping, but you cannot prove it, और उसका जो impact है वो एक साल में नज़र नहीं आता, 2 साल में नहीं नज़र आता. You are slowly and gradually trying to kill the industry. Marginal cases, and at the end you like to take up the market, be monopolistic, and recover all your losses. Then we have got the concept of hidden dumping to eliminate competition, and normally the importer and exporter are related in this, in hidden dumping, and it is difficult again to prove it. And then there is a concept of profit maximizing and marginal cost. Now I'll try to explain what is profit maximizing and marginal cost, and these are almost descriptive, and I don't think so we need more elaboration on them. So what is the borderline that a certain company or certain country is dumping a product, or it is not dumping a product? What is the borderline? Borderline of what? That a certain product is being dumped, or it is not being dumped. We'll see that. The concept you're referring to is de minimis, the minimum level of dumping. If it is less than 2%, then it is not considered. We'll come to that. Normal value is the home price of that country. We will go into the details of each and every concept. So you don't have to worry about the concept now. Please hold your questions. At the moment, what I'm trying to tell you is what is profit maximization and what is how they are related to marginal costs. Next, Shiraz, please. Now suppose a firm ABC and company, it produces
radios or whatever product you feel like, say computers or whatever it is. And the example is in the descriptive form available on the slides. Suppose that this company has a capacity, installed capacity, to produce 100,000 radios per year. And the sale price is $20. The profit $4. The cost $16, and the fixed cost I'm sure you are all familiar with the fixed cost concept. Fixed cost is which is fixed, which doesn't change with the level of production, is 6. And variable cost, now variable cost includes the raw material, packing material, the inputs, other inputs, the labor, direct labor, the electricity and spares, so many other things, is $10. Now what happened was that this was on single shift basis. Now this firm decides that its sale price is 20, profit is 4, cost is 16, and fixed cost is 6, and variable cost is 10. Now it tries to double the capacity. How can it double the capacity? Double shift pay. So when it gets to double shift basis, now what happens to the cost? We'll try to work backward the concept of back calculation. Variable cost will not change. The fixed cost will either be splitted into 2 or would be 0 here, and the profit will remain at 4, and the sale price would become 14. That is in case if the fixed cost is not shifted here. Now what has happened? If we write sales price here again, now with this cost, this firm ABC, by reducing the fixed cost, gets an opportunity to export the entire quantity. Now if we get back to our definition, that says that this was his home price, and this would be its export price. Is this table clear to everybody? Now, if this company is exporting at $14 and its home price is $20, is there anything wrong with this mechanism? No, we are not going at the normal value at the moment. Is there anything wrong with this proposition? There's nothing wrong, because it's simple economics. You're trying to save the cost. Now, your concept. The home price is $20 and the export price is $14. What happens is, there are two possibilities. Suppose the country to which radios are being now sold at $14 has got no radio industry, or has got a smaller radio industry. And the third scenario could be that it has also got a big radio industry. Number one, no domestic
radio industry. Number 2, small domestic radio industry. Number 3, substantial or sizable domestic industry producing radios. Now what will happen? Where there is no domestic industry, this company would probably be charging more because there is nobody to affect here. Number 2, this will not come into picture. Number 3, that there is a substantial domestic industry in Pakistan as well for radios. And the cost of that domestic product, domestically produced radio, is say at about $18. Now what is happening? This gentleman has not done anything wrong. Economically, financially, cost-wise, this is a good proposition that you have increased the output, the capacity utilization by adding another shift. You have saved money, you have cut down cost on account of fixed costs, and you've reduced the price and you're selling it to the third country. Now, the issue that would arise is that if this domestic industry is hit by $14 radio and it is injured, so when there is injury, there is a case of anti-dumping. When there is no injury, there is no case for anti-dumping. So this is the basic concept of dumping. And if you have understood this concept, probably you will understand the entire dumping. So basically, it doesn't matter कि आप अपनी home production cost से कम बेच के ज़्यादा target industry की तरफ जा रहे हैं, उस पर dumping की। मैंने आपको यही एग्जांपल दी कि सपोजिंग देयर इज नो डोमेस्टिक रेडियो इंडस्ट्री और ये आपको $20 की चीज़ $14 में आपको दे रहा है. सो व्हाट्स हैपनिंग? हु इज बेनिफिटिंग? इंपोर्टिंग कंट्री के कौन लोग? कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर्स आर बेनिफिटिंग. सो द गवर्नमेंट माइट टेक कि जी इस केस में डंपिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन हमारे लोग बेनिफिट कर रहे हैं, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं लेते. अब वो कौन सा एक ये भी तो सिनेरियो बनेगा कि सॉरी, अब एक स्टेप हम इसमें आगे जाते हैं. इस केस में कुड यू शिराज, कुड यू जस्ट स्विच इट ऑफ? Supposing there is no industry, no domestic industry, and your country, the consumers of your country are benefiting from the dumped supply of radios to your country. कि जो आपको जो $20 में चीज़ मिलनी थी वो आपको $14 में मिल रही है. अभी अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट की. दिस प्रोडक्ट कुड हैव बीन ए रॉ मटेरियल ऑल्सो. तो उस केस में उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडस्ट्री होती, तो हर एक को सस्ते रॉ मटेरियल मिले तो वो बेनिफिट करता. अब इस केस में ऑल्दो यू विल ट्राई टू सी व्हेन वी प्रोसीड विद द लेक्चर कि कौन इफेक्ट हो रहा है इस डंपिंग से. डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो नहीं इफेक्ट हो रही. नाउ व्हाट कैन हैपन इज, सपोज दिस इज द कंट्री ऑफ इंपोर्ट एंड देयर कैन बी 3 suppliers टू इट. तो जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकेगा, अब ये सपोज दिस इज ABC कंपनी, ये डंपिंग नहीं कर रही बल्कि सिर्फ एक प्राइस मैकेनिज्म से बाय रिड्यूसिंग इट्स फिक्स्ड कॉस्ट इट्स ट्राइंग टू सेल एट अ रिड्यूस्ड रेट. अभी तक वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज डंपिंग, वी आर सेइंग दिस इज अ रिड्यूस्ड प्राइस बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड बिकॉज इट डजंट इंक्लूड द फिक्स्ड कॉस्ट इनटू इट. तो ये इसको $14 के ऊपर दे रहा है. अब ये कंट्री एक है, दिस वाज कंट्री A and let this be country B. Now what happens? Country B cannot supply it at $14 and is being deprived of the market share of this country. तो ये country B एक केस उठा सकता है against country A. Now this is third country dumping, जो कि इस country की exports को hamper कर रही है. Are you through with the concept? Or I have made it more complex? डंपिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने ये बताया, अगर एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है और वो $18 प्राइस पर जा रही है
अभी हम उस इंडस्ट्री पे गए नहीं है, अभी हम वो एग्जांपल ले रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ही नहीं। ये तीन चीज़ें हमने दी हैं ना, एक दी है वेयर देयर इज़ नो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एक है वेयर देयर इज़ स्मॉल नॉन रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री, एक तीसरी स्टेज है द इंडस्ट्री इज़ रिप्रेजेंटेटिव। अभी हम वी आर जस्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट वन। प्राइस कंपटीशन भी देने लगे तो वो डंपिंग में उसका आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये तो आप हमारे प्राइवेट लेकर अगर आप कम उस पर कर रहे हैं और आप उसको सेल कर रहे हैं तो वो किसी तरह से भी लाइक वो कंट्री बी केस किस तरह से पुट कर सकता है ना। कंट्री बी की तरफ तो हम आते हैं अभी, लेकिन जो पॉइंट आप यहाँ रेज कर रहे हैं, अब यहाँ पर इस मुल्क के लिए दो ऑप्शंस थे। एक कि वो जो इसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट थी $6 की, उसको वो डिवाइड करता और इधर 3 इसमें से निकाल देता, तो ये $17 उसकी होम प्राइस बन जाती और उसकी एक्सपोर्ट प्राइस भी $17 रहती। ठीक है, क्या किया उसने, सिर्फ उसने अपनी फ़िक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दिया और प्राइस स्ट्रक्चर को नीचे ले आया। डोमेस्टिक मार्केट में भी उसने कम कर दी और ओवरसीज़ भी कम कर दी, लेकिन उसने यहाँ ऐसा नहीं किया। व्हाट ही हैज़ डन इज़ कि उसने फ़िक्स्ड कॉस्ट यहीं चार्ज की है अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, और उसकी रिकवरी भी किससे की है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से। उसकी फ़िक्स्ड उसकी जो होम प्राइस है वो यहाँ पर इस सूरत में हो गई $20। यहाँ पर उसने $14 यहाँ पर कॉस्ट चूँकि शिफ्ट नहीं की है। ये दिस इज़ ए फिट केस ऑफ डंपिंग, ऑल्दो दिस कैलकुलेशन शोज दैट नथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग विद द एक्सरसाइज, द इंडस्ट्री हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस हियर। फॉर एग्जांपल सर वो फिक्स्ड कॉस्ट को $3 डिवाइड करके $17 पर भी अगर वो बेचता तो $18 की डोमेस्टिक मार्केट को तो कौन सी डोमेस्टिक को? नहीं, लेकिन वो डंपिंग नहीं है ना, बिकॉज इट्स होम प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट प्राइस इज द सेम। द कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग इज दैट व्हेन द होम प्राइस इज ग्रेटर एंड द एक्सपोर्ट प्राइस इज लेसर। अब वो ग्रेटर को किस तरह एडजस्ट करना है, लेसर को किस तरह एडजस्ट करना है, विल ऑल्सो सी दैट। तो ये एक थर्ड कंट्री की डंपिंग हो जाती है, जबकि अब इस मुल्क में कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इस कंट्री ए की डंप्ड एक्सपोर्ट्स की वजह से कंट्री बी जो इस कंट्री में जो इंटरेस्ट ले सकता था वो डिप्राइव हो रहा है। सो इस केस में ऑल्दो दिस वाज आउट ऑफ आई डिडंट हैव इन माय माइंड टू पुट दिस एग्जांपल हियर, लेकिन सिंस यू हैव रेज्ड दिस क्वेश्चंस तो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इट फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज दैट देयर इज अ स्मॉल इंडस्ट्री। अब जहाँ स्मॉल इंडस्ट्री है तो वहाँ पर जब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री की स्टैंडिंग को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर वो रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्री नहीं है तो दे कैन नॉट। सर अगर आप ये कह रहे हैं कि कंट्री है $14 पे दे रहा है, ठीक है, कंट्री बी जो है वो डिप्राइव हो रहा है उससे और कंट्री बी केस पुट कर सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ कंसर्न या जो पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लाइक कंट्री है अगर $14 पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसकी डोमेस्टिक प्राइस भी $14 हो, अगर वो डोमेस्टिकली भी $14 ऑब्वियसली तो फिर कंट्री बी केस रेज नहीं कर ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी डंपिंग इसके खिलाफ हो रही है ना, ABC कंपनी के खिलाफ। जस्ट अ मिनट, ABC के खिलाफ तब बनेगी कि अगर यहाँ पर वो उसकी डोमेस्टिक 20 पे ही रहे और उसकी जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो 14 पे आ जाए। अगर वो 17 कर देता है तो फिर इवन देन कंट्री बी हैज़ नो राइट टू मेक आउट अ केस। तो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द होम प्राइस एंड द एक्सपोर्ट प्राइस। एज सच नहीं, कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं हम कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि चूंकि नहीं डंपिंग में इसकी तो नहीं डंपिंग में आएगी, इसकी आएगी ना, क्योंकि इंटरेस्ट इसका भी तो लूज हो रहा है ना यहाँ पर। ऑब्वियसली अगर वो भी डंपिंग कर रहा है तो केस रेज नहीं करेगा ना। अगर वो खुद कंट्री बी भी नॉर्मल प्राइस पे सेल कर रहा है तभी उसको डिसएडवांटेज हो रहा है ना। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको कोट की है, इस एग्जाम्पल को कोट करने का मकसद सिर्फ ये है कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, लीगली, अपार्ट फ्रॉम एंटी डंपिंग एक्ट, इस पूरी प्रपोजिशन में कोई ख़राबी नहीं है। You can easily do that, but if this supply at $14 is affecting or injuring your domestic industry, and if you are able to prove that the home price is $20
and the export price is $14, then you can initiate the case or invoke the anti-dumping agreement. Can we get back? So we have covered this almost, yes. सर ये पहले वाली केस में अगर नॉन डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ये $14 पे सेल कर रहे हैं, बाद में डोमेस्टिक इंडस्ट्री बन जाती तो फिर वो तो कंपटीशन में आ ही सकेगी। उसके लिए एक केस है कि रिटार्डेशन का, कि इंडस्ट्री को लगने नहीं दिया गया, और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि जी आप इंडस्ट्री को लगाने जा रहे हैं और आपने फिजिबिलिटी कंडक्ट की है, आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट वर्कआउट की है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वर्कआउट की है, अब आप लोन लेने जा रहे हैं, तो देन यू कैन ऑल्सो अप्रोच टू द गवर्नमेंट। प्राइस डिफरेंस में एक केस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ राइस। राइस इज फॉर एग्जांपल 10 रुपीस per kg इन पाकिस्तान। किसी ऐसे मुल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे इट इज नॉट अवेलेबल, वहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइस इज 30 रुपीस। तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट प्राइस में डिफरेंस है नहीं, फिर तो आप रिवर्स कर रहे हैं ना, फिर तो आपकी एक्सपोर्ट प्राइस इज ग्रेटर देन योर होम प्राइस। सिनेरियो ही रिवर्स कर दिया ना आपने। इफ आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन प्रॉपरली, फिर तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट जी, से दैट अगेन। Yes, good question. It will be against a specific exporter of that country. वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, then you can do it on entire country also. पूरे मुल्क पे भी लगा सकते हैं। क्या चीज़? The chamber is not the producer. Chamber is something else. But पहले तो मुझे ये बताएं, what do you understand by the chamber? नहीं। Chamber is a representative body of the manufacturers, industry and the traders. So they are represented there. So chamber is a different thing. डिवैल्यूएशन भी एंटी-डंपिंग को सपोर्ट करता है। सेकेंडली रेट ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं इंटरनेशनल, ये भी इफेक्ट करते हैं एंटी-डंपिंग को। ना तो फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट करता है, ना एक्सचेंज रेट इफेक्ट करता है। डिवैल्यूएशन ऑफ प्राइस, डिवैल्यूएशन ऑफ प्राइस तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, रिडक्शन ऑफ प्राइस कॉन्सेप्ट है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, करेंसी का वो आगे हम देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट है, उसकी भी एडजस्टमेंट आप लेंगे जब वर्कआउट करेंगे। तो जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी have covered this. Now what is the economic rationale? The economic rationale is that high domestic price है, say for instance high levy of central excise duty है, आप डोमेस्टिक मार्केट में उस एक प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाते, तो यू लुक फॉर सम फॉरेन मार्केट, वहाँ जाते हैं आप एंड यू ट्राई टू सेल इट देयर। आइसोलेटेड मार्केट है, मोनोपोली और कार्टेल है डोमेस्टिक मार्केट में, वो मोनोपोली जो है वो प्राइस को नीचे ही नहीं आने देता है। देन हाई बैरियर्स, नॉन टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स, दे शील्ड द डोमेस्टिक मार्केट, एंड if any of the above is positive, so you can opt for dumping. You can, not legally but illegally, you can try to sell it at reduced prices abroad. Again, अगर उस मुल्क की इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है, इंजर हो रही है, तो there will be a case against you. Otherwise people will keep quiet. They are happy कि सस्ती चीज़ मिल रही है. Next. Arbitrary price. Arbitrary, anything which has no logical basis. Arbitration, arbitrary, without any logical reason. Now, dumping has varying interest and pressures, and the first is that low prices of imported products may harm the domestic industry. As I said, कि अगर domestic industry है तो it may harm it. और दूसरी सूरत में अगर कंज्यूमर इंडस्ट्रियल यूज़र है, उसको सस्ते रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो व्हाट इट विल डू इज़ द इंडस्ट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स। Good question. You suggest what should be done?
Now when there is now what you are saying is, if you put it into technical terms, what you are saying is that there is an export price, but there is no normal value. Then in that case we'll try to construct the normal value. Now this is part of the course itself, so I'll not answer it here. नहीं, डंपिंग का ये मतलब नहीं है कि आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच रहे और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं. डंपिंग मीन्स योर होम प्राइस इज हायर, योर एक्सपोर्ट प्राइस इज लेसर. But you just take a note of this question. It's a good question, but I'll try to tackle it when at the appropriate place. Yes. Don't care for the country जिसमें आप ये dumping कर रहे हैं, उसकी domestic price क्या पड़ेगा? Domestic price है ही नहीं ना. यही तो situation that gentleman has raised. कि there is no domestic price. There is no Importing country उसकी domestic price का level क्या आप नहीं, वो देखना पड़ेगा कि वो दो मुल्क इकोनॉमिकली एक जैसे हैं कि नहीं. अब ये भी तो मुमकिन है कि आपके मुल्क से चीज़ें डेवलप्ड कंट्री में जा रही हैं, उस डेवलप्ड कंट्री की कॉस्ट को तो नहीं आप कंपेयर कर सकेंगे. इफ़ यू आर कंपेयरिंग इफ़ यू हैव टू कंपेयर द प्राइस ऑफ पाकिस्तान, you have to take a country which is like Pakistan. Now all these questions will be answered because we have these topics ahead. So legal basis for anti-dumping action are: number one, the Article 6 of GATT 1994, which was earlier referred to as GATT 1947. Would you like to solve the paper now? No, the original paper, side by side. कौन मिस किसने किया था? You missed one because I've. So you can solve. जी. So you can solve this. आप साथ साथ करते जाएं. It will save time. आपने भी देना. डबल एक्शन करना पड़ेगा जी. लेक्चर भी सुनेंगे और पेपर भी देंगे. And then there is a supplementary provision to Article 6 in Annex 1. We'll see that as well. We've got agreement on implementation of Article 6. That is again the one brought into the WTO. And then we've got Pakistan's anti-dumping ordinance 2000. जी? अब मैंने चूँकि पेपर्स ये बांट दिए हैं जी, it will be out paper, फिर मुझे आपके लिए नया बनाना पड़ेगा फिर. अच्छा, चलिए as you please. Then we have got Pakistan's anti-dumping ordinance. Now this ordinance is basically made and prepared on the basis of these three things. So we will not be going into the details of clause by clause of this agreement, Pakistan ordinance, but we'll try to go clause by clause of these agreements, and these can follow the later one. Now the basic principles for the application for anti-dumping measures is that number one, it is non-discretional. Now non-discretional means that it is not a discretion that you can straight away impose anti-dumping duties. Now non-discretional is because you have to conduct an investigation, and that investigation must take you to the cause of dumping, and the relationship with the cause has to the injury to the domestic industry. So this is non-discretional because there need to be a cause for that injury, and that injury should have been the result of dumping. Is the class with me? No. Non-discretional means that the levy of anti-dumping duties is not discretional. What is discretion? On own will, by choice. So this is not by choice. Unless there is a cause and effect. Causality. Effect relationship between dumping and the injury. Now we'll see what is injury, what is causation. Unless there is a cause and effect relationship between dumping and injury, you cannot levy anti-dumping duties. Number one. Number two, that determination has to be based on an investigation. Investigation in the case is necessary. Now in day before yesterday's dawn, the National Tariff Commission has given out a
half-page advertisement on preliminary anti-dumping measures on sorbitol. Sorbitol is Indonesia and France. So I would request all of you to get hold of that copy. If somebody gets it, maybe you can circulate that. And this is why because of these two things, number one, you need to have the cause and effect relationship. And number two, that cause and effect relationship should be based on some investigation, and once it is based on an investigation, only then anti-dumping duties are allowed. And that is why this is called to be contingent trade remedy laws. Contingent means dependent. It depends on investigation. It depends on the cause and effect relationship. It depends upon the investigation. So unless you have these two things, you cannot levy anti-dumping duties. And that is why along other trade remedy laws, this trade remedy law is also called the contingent trade remedy. Now if you look at the 3 steps of anti-dumping, or the prerequisites or the preconditions for anti-dumping action, number 1 is that you have to prove that dumping is taking place. And if dumping is taking place, there should be some injury to the domestic industry. And number 3, that there is a causal link between injury and dumping. So unless these 3 things are there, the case cannot be determined. You cannot levy anti-dumping duties against any import of any product. Yes? Sir, is it necessary that this AD action is to be taken after that injury has been made, or if the country fears that this product is being imported may cause that? Yes, now you are entering into another new subject which is there, and that subject is threat of serious injury. Because you have said that you have to prove करने की injury हो गई है. अभी हमने इंजरी को डिफाइन नहीं किया, राइट? इंजरी मीन्स मटेरियल इंजरी, इंजरी मीन्स थ्रेट ऑफ सीरियस इंजरी. जब इंजरी की डेफिनेशन में जाएंगे तो अगेन योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. So there are 3 things, I repeat, 3 preconditions. Number 1, that there is dumping. Number 2, that this dumping has caused injury to the domestic industry. And this injury, for this dumping and injury, there is a causal link between these two. So this is the prerequisite. Unless you have these 3 established, you cannot initiate or you cannot levy anti-dumping duties. Dumping cause of subsidy. Subsidy given to an industry for exporting an item. Does it fall into dumping? No, subsidy is against countervailing measures are against subsidy. Subsidy is the next topic. At the moment we are only doing dumping. Now if we look at the steps of examination, the following 3 steps are involved. Number 1, that you determine the dumping margin. And to determine this dumping margin, you must have the export price, you must have the normal value, and you must have the comparison of the export price and the normal value. Then you determine the material, or gentlemen, you then under injury you determine what is material injury or threat of material injury. Now your question is partly answered here, but in detail it will be answered when we try to learn about the injury itself. And then again there is a causal link between these two. Now I repeat, to determine the dumping margin. Now what is dumping margin? The difference between the normal and the export price is the dumping margin. And to offset that dumping margin, what do? You levy anti-dumping duties, right? So to determine the dumping margins, what you do is determine the export price. Now export price has got a specific definition. It has got the method of how do you work out export price. Then you got a method, if there is no export price, or if the export price is not normal, how would you determine the normal export price? Then the normal value, if there is no normal value, like somebody pointed out that there is no industry, or there are no domestic sales, how would you determine the normal value?
then there are ways we'll try to see when we go to normal value. And then once you have done that, you compare the two. Now once you are comparing them, how would you compare them? So, keeping in view the tariffs in that How would you compare them? What are the basis of comparison? Can you compare guava with an apple? No. So you got to compare apple with an apple. Like products की बात ही नहीं हम कर रहे. We're talking about the price. Product कहाँ से आ गया इसमें? Yes, but say what we are comparing. What should be the basis? कि आप एक्सपोर्ट प्राइस का भी वही लेवल लेके आएँ और नॉर्मल वैल्यू का भी वही लेवल लेके आएँ. देयर बाय मीनिंग अगर कुछ टैक्सेस आपने नॉर्मल वैल्यू में से निकाले हैं तो वही चीज़ें आप एक्सपोर्ट प्राइस में से भी निकालेंगे. टू ब्रिंग देम एट पार, एडजस्टेबल, सेम लेवल. अगर एक को एक्स फैक्ट्री प्राइस लिया है तो दूसरे की भी एक्स फैक्ट्री लेंगे. वॉट एवर विल ट्राई टू सी. वुड यू लाइक टू आंसर दी योर क्वेश्चन पेपर साइड बाई साइड और द टेस्ट यू मिस्ड? अच्छा, anyway, so once you have done this, you need to develop कि इन दोनों में causal link है भी कि नहीं है. Now there is a possibility कि that there is no causal link between them. कोई आपस में रिश्ता ही नहीं है डंपिंग का और इंजरी का. इंजरी किसी और वजह से हो रही है. वो उस प्रोडक्ट की डिमांड ही मार्केट में ख़त्म हो गई है, तो वो डंपिंग की वजह से उसको इंजरी नहीं हो रही. अभी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंजरी. विल टॉक अबाउट दैट. इंजरी किस तरह से है, किस तरह क्या इंजरी का क्या मतलब है, डिटरमिन कैसे की जाती है. बट यू हैव टू डेवलप द कॉजल लिंक, द रिलेशनशिप बिटवीन द डंपिंग एंड द इंजरी, एंड दैट इज नोन एज कॉजल लिंक. येस, नेशनल टैरिफ कमीशन in Pakistan, rest of the world, it's either the customs department or anti-dumping department separately found for it. And there could be a possibility कि investigation part एक एजेंसी करे और levy of anti-dumping duty दूसरा करे. Like in Australia. Australia में anti-dumping की investigation उनका एक अदारा है, वो भी tariff commission के नाम से ही है. And now they have merged it. Earlier it used to be separate. वो इन्वेस्टिगेशन वो करते थे, एंटी डंपिंग ड्यूटीज कस्टम्स वाले लगाते थे. इन पाकिस्तान दिस पावर रेस्ट्स विद वन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नेशनल टैरिफ कमीशन. थर्ड पार्टी आपके जहन में कहाँ से आई? हाँ, अच्छा, मैं समझा था दूसरे फरमा रहे हैं ना. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड कंट्री. वो इस्तेमाल होती है जब आप नॉर्मल वैल्यू को डिटरमिन करते हैं. वो उस थर्ड पार्टी का एक कॉन्सेप्ट वो है. जो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट आप फरमा रहे हैं कि बीच में कोई आके तो सुलह सफाई करा दे, नहीं, इस तरह का कोई नहीं. इसके लिए WTO है ना, WTO का वो सिस्टम है. इसमें पैनल्स हैं, पैनल के पास केस जाएगा. डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो भी हम देखेंगे क्या है आगे चल के. There are many companies which are manufacturing ready. Let's say there are 4 or 5 companies manufacturing. I didn't get what you're saying. So let's say there are 4 or 5 companies manufacturing ready. And once this export of $14 per radio is in the domestic industry, 3 companies or 4 companies, they adjust to the same level. By reducing their profit margins, they also come down to 14. Except for one, which is reduced. There is only one company which is reduced. Many companies in that country, they adjust to the lower value of the export price. Well, I'll answer this question when we go to the domestic market. We have got a slide on it. We've got figures कि वो उसको केस को entertain करेंगे या नहीं करेंगे. Now what you're trying to say is कि 3-4 what he's saying is there are 4 manufacturers, 3 of them try to adjust with this price and they don't make any hue and cry, and that could be a case probably where there was over profiteering at that time. Now they have reduced their margin
and only one unit is left which is injured. Now we'll see what happens to that. Now this is what you're saying. Next. Now what is an export price? Export price is a price actually paid or payable to an exporter for an investigated product. And where it appears that the export price is unreliable because of the association or a compensatory arrangement between the exporter and importer. Now what if, number one, it says that export price is the price for which the exporter actually gets the payment or gets payable or gets paid for an investigated product. Now we are talking of a product which is under investigation, which has been exported from country A to country B, and for which country B, importer of country B, pays to the exporter of country A. Number one. Get back to the first slide. So we have already started the examination. And when it appears that the export price is unreliable. Now how could it be unreliable? Because of the association between the importer-exporter or the compensatory arrangement. Any compensatory arrangement between the importer and exporter. Then the export price may be constructed on the basis of the price which the product is first resold to an independent buyer. Now what is an independent buyer? Which probably doesn't have this arrangement. It's an independent. It's number one, they are not related. It's an independent buyer. जो export price उस independent buyer को मिली है, then you will take that price as the export price. What is the concept? I repeat it. Number one, we forget this because this is simple. This is a simple statement, right? Now we come to this. This says that if the export price is unreliable, that you can't depend on the price, on the export price. Now how could that be unreliable? Number one, it's a compensatory arrangement between the exporter and importer. They are related. They are making some other arrangements. Under table transaction है, अलग से price जा रही है, कहीं और compensation दे रहे हैं. The export price is not normal. So can we say that first of all we look at the landed cost of the imported item, and once if there is a doubt between the landed cost, then we can go for the market price. Export price. Market price means export price. Domestic. Here local market price. For example, let's say. No, when you use the word market price, then we have to clarify what market we are referring to. Are we referring to the exporter's market price or the importer market price? Somebody is, as per the claim, somebody is dumping, let's say, cotton linen in Pakistani market. First of all, we look at the landed price at Pakistan, and then if we are sure that there is some compensatory arrangement. देखिए ना, what is a landed price? That means the original cost plus the freight and everything. So अगर आप उसका भी वहाँ पर भी यही arrangement ले रहे हैं, normal value का, उसमें freight और सारी चीज़ें डाल रहे हैं, inland taxes डाल रहे हैं, तो फिर आप यहाँ भी landed cost लेंगे. अगर आप यहाँ पर C&F ले रहे हैं तो वहाँ भी उसकी ex factory लेंगे. That is what I referred के उसको you have to compare price wise apple with apple, the level with level, right? So then in that case, if the export price is not reliable, what you can do is, obviously, that is what it says, that there are some compensatory arrangements. Then if the export price is not reliable, what you will do is, you will try to take the price of that very product sold in the same country to an independent buyer. Next. Is the concept clear so far? Sir, what if we are taking the normal price and the export price? What if, like, for example, in Karachi, the export processing zone, where there is no duty level and everything? Now, what is export processing zone, first of all? Tell me that. Export processing zone is a country within a country. The laws of the land, the labor laws, the tax laws don't apply to that zone. What's happening in that zone is, say if this is Pakistan,
This is an export processing zone, EPZ. Now goods are coming straight to this, raw material is coming straight to this zone, and it is exported from here directly. These goods, they don't have tax of the land, that is the taxes of which the Pakistani government imposes on its normal import and export. So this is a small country within a country. So this will not be a good example. How do you determine that this export prices are high? It's a good question. We'll try to see as we proceed. ये समझ नहीं आया? No, it's simple. This is that if the export price is unreliable, that if the export price, you cannot base your investigations on the export price. It is unreliable for a number of reasons. Number one could be that there is an association, there is some system, there is some connivance between the importer and exporter. And that connivance could be that, all right, I supply you this marker for $10. But the price is same, you've reduced the taxes and duties, but this price is being compensated elsewhere. The money is going back to the exporter. There is a compensatory arrangement, right? साहब पहले तो मुझे ये बताइए MFN यहाँ आएगा कैसे, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। वो कंपनसेशन थी मार्केट एक्सेस के तहत ना, ये कंपनसेटरी अरेंजमेंट है, ये कंपनसेटरी अरेंजमेंट है कि आई एम सप्लाइंग यू एट 10 रुपीज but you have to compensate me, send the money back. This compensation is not which WTO member country is giving to the other WTO member country जो आपने market access में पढ़ा था. So what I get from this statement is Yes. ये मतलब कि इसके बाद किसी हमने पहले जो इसको लिया इसके बाद की कंडीशन Obviously resold दोबारा जब बेचते हैं आप उसको. Next. पीरियड के बाद उस पीरियड अब पीरियड जब आप पीरियड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो you'll be mixing up the concept of period of investigation. इसलिए don't mix the period, the word period. आप स्टेज की बात कर रहे हैं ना. मैं यही कह रहा हूँ कि ये जैसे ना कि फंसिया कि इस साल ये मेरे पे इल्ज़ाम लग गया ना एंटी डंपिंग का. अब ये है कि इसके बाद जो मेरा पास पीरियड आया उस देखिए नहीं पीरियड तो इसमें आ ही नहीं रहा है साहब ना. ये कह रहा है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट प्राइस रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्राइस में बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज फर्स्ट रीसोल्ड टू एन इंडिपेंडेंट बायर. डोमेस्टिक उस प्रोडक्ट का जो बायर है उसको जो आपने चीज़ बेची है वो प्राइस ली जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ अनरिलायबल है. नाउ व्हाट इज अनरिलायबिलिटी? इनवॉइसिंग नहीं, अंडर प्राइस्ड. अंडर इनवॉइसिंग इज समथिंग एल्स. अंडर इनवॉइसिंग में ये होता है कि अगर $10 उसकी नॉर्मल वैल्यू है तो आपने ऑन पेपर 8 पे की है, अंडर टेबल 2 पे की है, प्राइस आपने उसको पूरा किया है. लेकिन यहाँ पर अंडर यस यस इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? कैन वी प्रोसीड? जी प्लीज. ना फिर ये तो उसकी प्राइस देखनी पड़ेगी ना कि वो जो एक्सपोर्टर है वो डंपिंग कर रहा है या नहीं कर रहा. अब आप प्रपोजिशन जो आप दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि देर आर मोर देन 2 सप्लायर्स अंडर कंसिडरेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो आपने उसकी प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस को नहीं लिया. आपने ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट प्राइस क्या है. लाइक जो दूसरा पॉइंट है जिसमें आपने इंडिपेंडेंट प्राइस एस्टैब्लिश करनी है, उसमें आप ये कि डिफरेंट पार्टीज वही प्रोडक्ट उस मुल्क को एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है. अब हर पार्टी जो है उसकी जो प्राइस है एक्सपोर्ट प्राइस वो डिफरेंट है. नॉर्मली जब एक सप्लायर देता है ना जी, तो वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता कि दो इंपोर्टर्स को 2 मुख्तलिफ प्राइस दे दे. उसकी 2 वजूहात हैं. एक तो वो कस्टम्स क्लियरेंस स्टेज के ऊपर ही चीज़ पकड़ी जाएगी कि ये अंडर इनवॉइसिंग हो रही है. तो
और डिफरेंट इंपोर्टर्स हैं, 7-8 इंपोर्टर्स हैं, डिफरेंट प्राइसेस एस्टैब्लिश हुई हैं। डिफरेंट प्राइसेस हो नहीं सकती है ना जी। अगर सप्लायर एक है तो वो 7 मुख्तलिफ इंपोर्टर्स को 7 मुख्तलिफ प्राइसेस पे, तो फिर यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डिफरेंट सप्लायर्स हैं ना, तो फिर अगर डिफरेंट सप्लायर्स हैं तो यू विल हैव टू सी डिटरमिन के उनमें से कौन सा डंपिंग कर रहा है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है। अभी तो वी आर टॉकिंग ऑफ वन सप्लायर जिसके अगेंस्ट आपने इन्वेस्टिगेशन की है कि दैट सप्लायर इज डंपिंग इनटू पाकिस्तान। ये चीज़ें जो आपके सवाल हैं, चूंकि आगे इनकी क्लैरिफिकेशन मौजूद है, इसलिए मैं अभी डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगा। विल गो इनटू द डिटेल एज वी प्रोसीड। नेक्स्ट, शिराज, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और यू स्टिल स्टक समवेयर? So what is a normal value? The normal value is defined as, number 1, it's the comparable price. Number 2, in the ordinary course of trade. Number 3, it should be for the like product. ये नहीं है कि वो price कुछ और किसी और चीज़ की है और यहाँ पर किसी और चीज़ की हम price कर रहे हैं. And when destined for consumption in the exporting country. Now, NV is therefore the price of the domestic sales in the exporting country. Now, there are 3 concepts here. The first one was, the last slide was the export value, and the export value said that it is the value for which the exporter gets paid from the importing country. Number 2, it said that if the export price is not reliable because of the relationship between the exporter and importer or any other compensatory arrangement, you could construct the export price by taking the same product or the same price when resold to an independent buyer. So that was the export price. Now against that, we have got the concept of what is normal value. The normal value is defined as, it should be the comparable price. There should be a comparison, and we talk of comparison, it means a fair comparison. Again, when we proceed with the lecture, we will see what is a fair comparison. Then it should be in the ordinary course of trade, and it should be for like product. So normal value is basically the price of the exported goods in the exporting country. Any confusion here? इसीलिए इसको हम आगे चल के देखेंगे कि कंपैरिजन, जो लफ्ज़ आया कि इट शुड बी कंपेरेबल प्राइस, जब कंपैरिजन पे लाएंगे तो वील हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स कि उसकी ऐसा ना हो कि वहाँ तो आप प्राइस ले रहे हैं उसकी स्टोर की सेलिंग प्राइस. नो, इफ यू आर टेकिंग द सेलिंग प्राइस देयर, यू हैव टू टेक द सेलिंग प्राइस हियर, दैट इज द एक्सपोर्ट वैल्यू. अगर वहाँ आप एक्स फैक्ट्री ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी C&F लेते हैं या क्या एडजस्ट करते हैं. सो अगेन आई रिपीट, you can only compare like with like. Next. जी, sure.